हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। आशा करें आपण मैंने भलरे थे। तेरे चलतु आज डिस्कसन करवा ह्यूमन फिजियोलॉजी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रे स्टार्ट करवा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्रथम तो जानी रखा उचित food is the one of the basic requirement of all living organism. Food provides energy and organic materials for growth and repair of tissue. आमको बंची रहिबा खाद्यर आवश्यकता रही। डाइजेशन कौन? डाइजेशन हूँ गोटे प्रोसेस जोटा कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स रे कन्वर्ट करवा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ कौन? स्टमक, टंग, इंटेस्टाइन एवं ता सहित एसेसरी ग्लैंड अच्छी जमीती लिभर एवं पैनक्रियाज जोटि कि बहुत सारा एंजाइम किछि जूस सिक्रेट होकि आमर डाइजेशन को सरल करि थाए। The main purpose of digestion is to break down of the food into smaller and smaller components and then absorb the nutrients into the body. The major components of our food are carbohydrate, protein and fats. Mineral एवं vitamin small quantities रे हमको दरकार होई थाए, किंतु खाद्य रे मिनरल एवं विटामिन निहाती रहिबा जरूरी। The whole process of digestion is consist of 4 main steps, that is ingestion. Ingestion is the taking of food into the body, that is chewing your food to break it down. Next होची digestion. Digestion breaking down of food by the enzyme जोटा कि फूड टाकू तार कन्स्टिट्यूएंट रे कन्वर्ट करिबा एवं एब्जॉर्ब करिबा बाय द बॉडी। देन एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तापर आसला कोन? एलिमिनेशन, वेस्ट मूविंग आउट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट आसला कोन? हमरो इंजेक्शन। In this process, ingestion we chew food through our teeth and gulp down food through our mouth. आमे फूड को चबई थाउ एवं गल्प करि थाउ माउथ साहाय्य रे। एही प्रोसेस रे मेन ऑर्गन हो इन्वॉल्व होउचंती माउथ, सलाइवरी ग्लैंड रो सलाइवा सिक्रेट है कि फूड सहित मिसिकी से डाइजेशन रे हेल्प करे। टीथ द्वारा आमे चबई थाउ एवं टंग द्वारा एंड बाय द help of tongue saliva is mixed with food. Next asla kon? Alimentary canal. Alimentary canal is mainly referred to as the pathway by which food enters our body and moves out through the anus. Alimentary canal ro parts होची mouth, buccal cavity, pharynx, oesophagus, stomach, intestine and anus. Alimentary canal is ectoendodermal in origin. एबे चलନ୍ତୁ देखिबा वर्किंग ऑफ ऑर्गन इन इंजेक्शन। इंजेक्शन रे को ऑर्गन हेल्प करूछंती। फर्स्ट हला कोन? माउथ। माउथ इज द ट्रांसफर स्लिट लाइक ओपनिंग गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। आउ फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, then mouth opens in buccal cavity. Muscle associated with upper lip, that is orbicularis oris, and lower lip labial frenulum. Then asla हमको buccal cavity. Buccal cavity is the first cavity of alimentary canal which include teeth, tongue and palate. buccal cavity रो main function होची mastication of food, that is food को चबेबा, and swallowing of food, that is फूड को गिळिबा। तापर आसला कोन? टीथ। ह्यूमन टीथ आर डिस्क्राइब्ड एज थिकोडंट। थिकोडंट मीन्स फिटेड इन जॉ। आम दांत गुड़िक जॉ रे फिट होइके अछंती। देन डाइफोडंट। डाइफोडंट माने होची आम होल लाइफ रे आम 2 सेट ऑफ टीथ आसे, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ भांगी जिबा पर परमानेंट टीथ आसी थाए। नेक्स्ट होची हेटेरोडंट, डिफरेंट इन शेप एंड स्ट्रक्चर। आमर टीथ रो
सेप एंड स्ट्रक्चर अलग अलग तेणु हेटेरोडोन मध्य कहुए. ह्यूमन टीथ आर जनरली 4 टाइप, दैट इज इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और बाइकस्पिड एंड मोलर. इंसिजर फॉर बाइटिंग, कैनाइन फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर एंड मोलर होची फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. Then tongue is a muscular and fleshy organ. Anterior part होची free, posterior attached to the hyoid bone. Then palate को roof of the mouth मध्य कहा जाए. It has 2 parts, that is the bony hard palate in the front and fleshy soft palate in the back of the mouth. The anterior part has some ridges, that is palatine rookie, and posterior projection outgrowth hangs, that is called uvula. Friends, we have reviewed a biology book from A.V Publication. The MCQs and questions from this book are too much relevant for your CHT and OSTET examination. Especially for CBZ students, this book is too much valuable. You can also suggest your friends and family members who are interested in upcoming NEET examination this book. They also have books for physics and chemistry too. For more details, check out our description part. Links are given there. Imparting quality education is always happy to help you. Thank you.